dancing. I request Mr. Rajesh Sharma to please welcome जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं हम दीप्ति नावल जी का और First of all, thank you for having us. It's a real honor to be here. Thank you very much. Thank you very much for making time to come out and speak to us. We can only say that we made this film, and the film is about identity, diaspora, and dementia. So clearly a comedy. It's not a comedy. But it is about a mother and daughter relationship, and it's set in London, and it has, of course, the fabulous Ms.Dipti Naval and the equally fabulous Tula and the occasionally fabulous Rajat Kapoor. So he's here tomorrow, I hope, and we will be able to watch the film together, and it will be far more valuable once we have all seen it together to be able to then speak about it, I think. So that's all I want to say about it. It's a film we have been told that needs to be experienced and not just watched. So I'm quoting from a review, and I'm delighted by it. Okay, so but then at least something about the films, like how long you take to shoot, when you conceptualize the idea. If you can talk about that shoot. The film's been a long time in writing, but it took only about 19 days to shoot. Largely because I shot the film myself, so I had to have one less conversation with the cinematographer. So it was much easier to talk to the actors at this distance than being 3 rooms away with a set of monitors and so forth. So it was a very intimate place that we were shooting in, and the experience was intimate also. I didn't like the film at all, as in put artificial lighting. I shot mostly with natural light, and that gave the actors, I think, freedom to be and move and give them a place to play and be free. And if you give actors of this caliber the right environment with which to practice their craft, you get the best from them, and I believe that we have. This film was part of the International Film Festival of India, IFFI, in Goa last year, and when we made Pushan first time. And Pushan, this is his first feature film, second feature film, but he is also a cinematographer, very fine cinematographer. So, could you please talk about your journey about as a cinematographer? I started cinematography almost 25 years ago, and I fell in love with it like I was in love with the theatre. But then a lot of things started to happen in the industry that were very difficult for me to take as a human being. So I moved away from that and decided to make my own film. The first one was called The Threshold, which you can watch on Hotstar, which has Neena Gupta and Rajat in it as well. And at that point, the freedom that offered me to be able to do new kinds of stories has brought about this possibility of speaking with you all and about working with Dipti, to be able to actually open that kind of film to public consumption. It's very hard to do, and to get a release is even harder. So I'm very grateful that this is happening. Coming to Dipti, when Pushan, came to him with the script, what was the reactions like? I mean to say, of course he liked the film, that's why he had done it, but what was the initial things? I mean, like, it's wow, or... Initially, when I heard this subject, that this is what the film is going to be about, and that immediately got my curiosity, and I thought, I didn't read the script initially. I was just told कि इस subject के ऊपर इस तरह की film बन रही है. It's a mother-daughter story. Bhushan Kriplani जो कि जैन कृपलानी के बेटे हैं, Zainu Jain, तो वो हैं, और Kalki is going to play the daughter. I just found the whole setting intriguing. You know, the subject itself made me say yes to the film without having read the script. Initially ये होता है कि आप पहले script पढ़ते हैं
और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि ये मुझे करना है कि नहीं. बट आई थॉट ये कितनी अलग बात है. यू नो अ मदर, I have to play a mother who is going into, is suffering from dementia. A strange relationship है between the daughter and the mother, and the daughter comes to kind of manage her somehow, and how the relationship unfolds and where it goes. That's what the film is about, and it was an intimate little experience shooting the film in London in the midst of the pandemic. 10 दिन हम लोग क्वारंटीन होटल में बंद रहे, और हम लोग रिहर्स भी करते थे. तो मतलब जूम पे, फ़ोन पे, मतलब अपने अपने लैपटॉप लेके, सिर्फ कोई अपने कमरे में बैठा है, कोई किसी और कमरे में बैठा है, and we were working. And the film is in English because it is about these NRIs. This woman who's an NRI living in London. तो मुझे, because I live part of my life in New York. My family migrated there. It was easy for me to identify with somebody who's living out there, not in India, has moved away, living her life in London or New York, wherever. तो मुझे एकदम से हाँ करने के बहुत reasons मिल गए. Yeah, that is one of the good reason. जैसे दीप्ति जी बताए कि इनके बारे में और हम डिटेल्स में जान पाएंगे, पर्टिकुलरली इनकी बचपन के बारे में, जो WIC देहरादून में हम इनकी किताब की विमोचन तो नहीं कहेंगे, बट बुक रीडिंग टुमारो ऑलरेडी देहरादून में अपने पर आ चुके हैं. वो अंतारा में पुस्तक का विमोचन तो हो चुका है, पर अभी जो है उस पर बातें हम करेंगे कल. और उसमें सारे दीप्ति जी की बहुत सारे अनसुनी कहानियाँ बचपन की बहुत सारे हैं, वो सब निकल के आएंगे. और पर्टिकुलरली जो ये बात आपने बताई है, मेरे दिमाग में अभी मतलब आया, स्ट्राइक किया कि NRI वाला इश्यूज जो, बट चूजिंग यू, दैट्स अ वेरी एप्ट डिसीजन फ्रॉम योर साइड एंड आल्सो anything else you want to talk about the films or any other? आप लोग पूछें कुछ, अगर आपको कोई curiosity. आप लोग पूछिए. I mean, where do we get so many students in one hall together? Actually, my question is as your movie name is Goldfish. Your movie name is Goldfish, right? Goldfish. Goldfish. So my question is, I'm not going in storyline, but just want to know that a movie is defined by its name. So how you choose the name Goldfish in this movie, and any story behind it if you want to share, and also how much is it actually in a typical movies we see just fight scenes and everything, but how much is important to show social issues in some movies, and are you planning to make any movies on social issues so we can take note? I'll answer the first part of your question first. Goldfish are supposed to have only 2-second memories. This is not really true. Nobody really knows. Which is why when you make a film about dementia or Alzheimer's, and that is a disease about memory, the title presented itself. Which is a disease which is getting more and more common nowadays. बहुत फैल रहा है बड़े. और होगा भी, होना भी है, कुछ कर नहीं सकते. The second, well, we're not meant to live this long, quite frankly. At the turn of the century, I think when at independence, the average life expectancy of a male in a village was 47. So I'm 2 years older than that. I'm living on borrowed time, man. So I just feel in some ways that's why Goldfish. ये एक मिथ है कि ये जो मछली है उसको सिर्फ हर दिन हर 2 क्षण में उनको लगता है कि भैया दुनिया बदल गई, and it's new for them. So that's an interesting way to do the title. The film is about already a social issue caused by this medical condition, which is having a huge impact on society, on healthcare, on the nature of caregiving, on the nature of families as they are disintegrating. जैसे आपकी माँ लगती है, लेकिन वो तो चली गई, वो वहाँ है ही नहीं. So that's a very big because of social dementia. And about children
how are they to care for their aging parents? कल आके देख लेनी चाहिए, या कि उनको संस्था में कल से आपका एटीट्यूड बदल जाएगा towards your parents. I hope so. उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया और आप उनको पाल पोस के बड़ा कीजिए. जब वो घर पे आता है और पेरेंट्स हैं घर पे, it is a very regular kind of a scene. That is not a role which I can really ever talk about. अगर आप मेरी और कुछ फिल्मों के गोल्डफिश देखिए कल, फिर बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसमें तो रोल ही नहीं था तो क्या डिस्कस करना है? Yeah. You can see a couple of But I am hands. a Hrithik Roshan fan within the commercial setup. Hello ma'am, hello sir. Hello. My question is, what is difference between real and real life? Real and real life. हम real में हम experiences को as actors हम experiences को इकट्ठा करके अपने memory bank में रखते जाते हैं, और real life में हम उन्हीं real experiences को निकाल के यूज़ करते हैं अपने कैरेक्टर में, अपने सीन के लिए. तो मेरे लिए तो दोनों ही रियल है. एक तो रियल लाइफ है, वो एक्सपीरियंस है, और जब मैं उसको रीलिव करती हूँ कैमरे के सामने, मेरे लिए वो भी रियल है. इनफैक्ट वो ज़्यादा फोकस में आता है, और वो ज़्यादा मतलब इट्स मोर लाइक अ कॉन्सेंट्रेटेड focused reliving of an experience, or living it with a far keener consciously, you know. That is for me, that is my process as an actor. हर एक्टर का अलग अलग प्रोसेस होता है. मैंने क्योंकि एक्टिंग सीखी नहीं है तो इसी से मैं काम चलाती हूँ. I can see one hand over there. अच्छा हो. So hello everyone, this is Mohan from Bihar. Hello. तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप जब कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आपके माइंड में क्या चलता है? जैसे हम भी एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो ये समझ नहीं आता कि जो हम लिख रहे हैं वो सूटेबल है या नहीं, फेवरेबल है या नहीं. क्या आखिर में जो आपने कहा मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा दोहराएं प्लीज. तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप कुछ लिखते हैं, जैसे स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं, तो क्या आपके माइंड में चलता है? क्योंकि आप अगर कुछ स्क्रिप्ट लिखते हैं और वो फेवरेबल होना चाहिए, सबको अच्छा लगे, कुछ ऐसा लगे कि हाँ ठीक है, अच्छा लिख रहे हैं आप. तो आप क्या सोच के लिखते हैं? मतलब कोई थिंकिंग वगैरह क्या सोच के लिखते हैं? इतना ज़रूर है कि सबके लिए स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं. ये अगर आप वो स्क्रिप्ट लिखेंगे जो आपको लगता है कि सबको पसंद आए, फिर वो किसी को पसंद नहीं आएगा. आप लिखिए अपने लिए, और शायद एक जिसको आप सुना रहे हो, क्योंकि एक क्षण में जिससे आप बात कर रहे हो वो एक ही व्यक्ति है. जैसे मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, लेकिन सुन बहुत सरल है. तो आप एक ही व्यक्ति के लिए लिखिए, तो शायद स्क्रिप्ट सक्सेसफुल हो जाए. उसको हंसाएं, उसको रुलाएं, उनको असमंजस या सोच में डालें, तो फिर शायद आपकी स्क्रिप्ट दूसरों को भी पसंद आएगी. है कि सेटिस्फैक्शन होना चाहिए जब आप लिखे. तो हाँ, आई कांट, थोड़ा सा स्लोली बोलिए आप, तो समझ गए. मतलब जो भी आप लिख रहे हैं वो आपको अच्छा लगना चाहिए. हाँ अच्छा जी लिख सर. रहे हैं तो कन्विक्शन होनी चाहिए. देखिए इतना है कि जो फिल्में हम बनाते हैं, जो इंडिपेंडेंट फिल्में हैं, लोगों को लगता है कि बहुत एरोगेंट पोजीशन है, ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा. तो हम अपने आप को यूनिक नहीं समझते, किसी से अलग नहीं समझते. तो हमें लगता है कि जो फिल्म हमें अच्छा लगे और जब हम बनाएंगे, हमारे जैसे सैकड़ों लोग होंगे तो उनको पसंद आएगा. तो ये पोजीशन एरोगेंट वाला पोजीशन है ही नहीं. हालांकि हमको नहीं आता है कि पिक्चर में के मतलब 6 गाने डाल के किसको नचवाए, हमको नहीं आता है. वो खौफ ही नहीं है. तो आई फील कि अगर आप मैस मीडिया के लिए फिल्म बना रहे हैं तो वो किसको पता है कि क्या वर्क कर जाएगा. अगर सबको पता है कि क्या वर्क होता है तो सारी फिल्में हिट होती है कि नहीं.
आप अपने लिए लिखिए सर, आपके इर्द गिर्द जितने आपके लोग हैं, आपके दोस्त हैं, उनके लिए लिखिए, उनको सुनाइए पकड़। और जब आपको लगेगा कि हाँ कोई हंस रहा है, रो रहा है, सोच में है, तो फिर शायद आप सही पगडंडी पे चल रहे हैं। किसी दिन वो पगडंडी गाड़ी में बदल जाएगी। I suppose. I hope that's helpful. I hope that is helpful. Very helpful. That's, thank you. I would love to ask one question. You know, best or favorite role so far in your career as of now? Goldfish. Wow. This is my most favorite role. अभी तक का. Thank you, ma'am. Thank you. There is अनकही, there is मैं जिंदा हूँ, Memories in March, Boy with the Top Knot, Leela, Listen Amaya. काफी सारे. Thank you, ma'am. Anyone else? Please. Any of the girls, very quiet girls. Ma'am, as you said that Goldfish is your favorite movie. Ma'am, what did you personally learn from that character of Sadhana Tripathi? Sadhana Tripathi, what did I learn? She learned never to work with me again. I enjoyed working with Bhushan so much. It was such a comfort zone he provided us, and I think we'll really always cherish that. Yeah. But Sadhana Tripathi, what she taught me, I think she taught me to kind of explore in my own head the process of aging, what it probably entails, what is going to come in the future, how would I prepare myself for being in that state if I was to mentally, if I was to lose my memory, if I was to start confusing कि मैं इस zone में हूँ या किसी और zone में जी रही हूँ, मैं क्या बात कर रही हूँ, the whole thing about relationships, how they get impacted because of what you are going through mentally. I think that has given me a lot of food for thought. Playing her has given me a lot of food for thought. I don't think I've come to the conclusion where I can say मैंने उससे ये सीखा है. अभी तो शुरू हुआ है process. Because अभी me, the character that I have played is gradually sinking in and saying how are we to deal with the process of aging, how are we to deal with our aging parents, कैसे क्या हम कर सकते हैं अभी भी उनके लिए, या क्या कर सकते थे, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, मतलब इस तरह के कई थॉट्स. माय क्वेश्चन इज कि आप 80s से काम कर रही हैं, जिसमें बदरूर इज माय फेवरेट. यस. ओके, सो अब उस 80s के दौर से यहाँ तक बहुत ट्रांजिशन हुआ है इंडियन सिनेमा में, तो आपके पर्सनल लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है? ज़्यादा नए सिनेमा से जुड़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है आज का सिनेमा. टेक्निकली वी आर फार मोर एडवांस्ड. पहले हम लोग जो फिल्में बनाते थे वो थोड़ी सी भोली जिसको कहा जाए, और टेक्निक वाइज वी वर नॉट वेरी savvy. Now our cinema is really savvy. It can compete with any other world cinema, कह लो जो भी है, international, and our actors are very skilled. They are much less inhibited today. They are very skilled. हर चीज़ वो करना जानते हैं. Dancers इतने great हैं, वो इतने disciplined हैं, इतने fitness के ऊपर इतना focus है. I mean, these are all the things जो today's time में सब मिलता है हमारे सिनेमा में. थोड़ा हम लोग जो मिस करते हैं वो है कि एक अपनापन जो था, जिस माहौल में हम काम करते थे पहले, वो एक फैमिली की तरह था. एक छोटा सा यूनिट जो फिल्म मैंने की, तो एक बहुत ही मतलब
क्या इंटीमेट सा माहौल होता था, वी वर लाइक अ फैमिली, और सब्जेक्ट्स जो थे वो कंटेंट बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरी था. दो आई डोंट थिंक 80s की फिल्मों में इतना कोई बहुत देयर इज़ मच टू बी सो प्राउड ऑफ इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, क्योंकि वो भोली भाली फिल्में होती थी, वो अच्छी सी बन जाती थी, और आई कांट से दैट दे वर ग्रेट इन कंटेंट. मेरा पर्सनल फेवरेट पीरियड जो है वो पुरानी ब्लैक एंड वाइट क्लासिक्स वो है, बिकॉज उसमें देखिए आप औरतों के लिए रोल्स, आई मीन देयर वर फिल्म्स रिटन फॉर मीना कुमारी, फॉर नूतन, फॉर नरगिस, फॉर मधुबाला, फॉर सो मेनी of the women there. I mean, they had achieved so much more than what we were able to achieve with our small films like जो हमने किए हैं. तो अब वो वापस जो है एक कॉम्बिनेशन सा आ रहा है, कमर्शियली सक्सेसफुल, वाइबल, प्लस ग्रेट रोल्स फॉर विमेन ऑल्सो. अभी आप रिसेंटली देखेंगे मैरी कॉम है, ये है, वो है, तो औरतों के लिए गर्ल्स हैव डन ग्रेट. They've done very wonderful work. Thank you. Yeah, please. Hello sir, hello ma'am. I am Gaurav Shukla from Prayagraj. My question to you is, days where हमारी ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है उनसे कॉप अप करने के लिए? क्या करते रहते? You're talking about career, ups and downs in, Yes sir, yes in ma'am. career. We are always looking forward to कि कोई प्रोजेक्ट आएगा इन फ्यूचर जो हमें एक्साइट करेगा, उसके लिए हम हैं, and we want to give it all, you know. So we never, I mean, of course there are downs and periods when you feel low and you feel कुछ अच्छा काम करने का मौका नहीं मिलेगा शायद, या नहीं मिल रहा है बहुत अरसे से. So I just stay, I don't do that much work because I'm always waiting for a good project to happen. In the meantime, I write, I paint, I keep myself creatively alive. तो नहीं तो मैं कुछ सीखना शुरू कर देती हूँ. I want to go back and study. It's not कि स्कूल कॉलेज कर लिया उसके बाद पढ़ाई खत्म. I learn a lot. I watch a lot of documentaries on YouTube. I learn all the time. I'm trying to grow all the time in my mind, in my opening my mind to so many different things. तो मेरा जो process of learning है वो चलता रहता है till a better project comes, and then I can say yes to it and then get excited about doing my next role. और जहाँ तक कोपिंग अप की बात है, ये भी मतलब जो है बहुमुखी प्रतिभा के भूषण भी कुछ कहेंगे आपको इसके बारे में. बिल्कुल. Are you guys media students? Some of them. Okay, you guys are. I'll say this to you. In this time where we live, I feel there is no downtime. If you think that you are depressed, that you are not getting a new project or something is not happening for you, just do it yourself. You have in your hand, with your mobile phone, more processing power than it took to put a man on the moon in the 60s. You have a lens and a recording device in your phone. You have nothing to stop you but fear. If you function from the position of fear, you will never do anything, and you will be depressed and not be able to cope with anything. If you function from a position of love, I love my work, I think I have something to say, and I think my close friends will watch it, then you will always have work. The result of the work, as they say in the Gita occasionally, doesn't really matter, and you have no control over it. But you can certainly get up in the morning and do the work. I think. No, you're right. And yeah, it definitely do those things. Before that, for your information, whenever she is free, she is never free by the way. But whenever she is not doing film, she is very much into writing her poetry. You must read her poetry. And also she paints. She paints very well. She like whenever if you see her painting, it is like
proper modern artist who has done some painting. Next time जब आप हिमाचल घूमने जाते हैं तो डेफिनेटली आप इनकी स्टूडियो में जाइए कुल्लू में, वहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा. She is also a very good photographer. ट्रेकिंग भी करते रहते हैं और इन्होंने ट्रेकिंग ऐसे करते हैं कि शी इज द लीडर, टीम लीडर, ये ट्रेक करवाते हैं लोगों को, ऐसे भी है. Yeah, no, because I like trekking, or you can say I like wandering in the mountains. So camera becomes an excuse कि मैं photography करने निकली हूँ. So I don't feel कि मैं time pass कर रही हूँ. But yes, it does help me. I mean, it's a combination. She is very humble. इनकी Incredible India की वेबसाइट से लेके शुरू करके बहुत ही मतलब नामचीन मैगजीन्स वगैरह में जो है इनकी फोटो छपते हैं. वो दीप्ति नवल बोल के नहीं है क्योंकि फोटो अलग से बोलती है. सो हाँ जी, आप बताएं, कुछ पूछ रहे थे. हेलो, मेरा मैसेज मैम के लिए है. मैं अपना नाम बताइए ना पहले. जी, सुरभि प्रिया. Yes. मैं ओल्ड मूवी बहुत देखती हूँ और मैम की मूवी मैंने देखी है साथ साथ. तो मैम की वो चेरीज फेस, वो यंग फेस मुझे बहुत याद आता है. जब मैम की एक मूवी की, इसी मूवी की एक गज़ल थी, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी को तुम्हारा छाया. मैं देख रही थी तो मैम को जब मैं देखी तो वही चेरी सी फेस, नेचुरल फेस. मैम अभी भी बहुत नेचुरल है. मैम यही मैसेज था. और मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ. मैम पहले का एरा भी आप देखें और अब का भी एरा आप देख रही हैं, तो मैम गर्ल्स के लिए क्या कंसिस्टेंट एक मैसेज आप देना चाहेंगी जो हम ओल्ड एरा से सीख सकते हैं, आजकल की जो न्यू एरा की जो गर्ल्स हैं मैम, उनके लिए आप क्या एक एडवाइस जो आप देना चाहते हैं जो आप थोड़ा मिस करती हैं उन लोगों में? नहीं गर्ल्स. हाँ, कुछ तो है मेरे दिमाग में कि ये जो आज का दौर है ना, इसमें हर चीज़ एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट समथिंग अबाउट देमसेल्व्स. तो वो रील्स बनाना और वो मैं ये खा रही हूँ, मैं ऐसे दिखती हूँ, मेरा ये पोज वो पोज, दिस इज बेसिकली जस्ट टाइम पास. It's not giving you anything. You could use your time in a better way. मैंने ऐसे खिंचवा दिया या पाउच करके be natural, be a woman of substance. ये frivolous चीज़ों में टाइम मत लगाओ. कुछ करके दिखाओ, कुछ हाँ अंदर से. Yes. Thank you, ma'am. A film called, which is a 90s, Rudali is a wonderful film. Or भी. I'm thinking of my films, but there are many other films. Have you seen a film called Par? Shabana Azmi, Nasiruddin Shah. गौतम कोशिश करो. पार, आई मीन आई कैन दो, मेरी बहुत सी फेवरेट फिल्म्स हैं उस तरह के सिनेमा में, तो मैं बहुत सी रेकमेंड कर सकती हूँ. स्मिता की एक फिल्म थी ना, नहीं भूमिका मंडी भूमिका, हाँ वो एक 90s की थी. हाँ 90s में. आक्रोश. It doesn't matter. Yeah, it doesn't matter. आक्रोश कर सकते हो. हाँ, वो पुरानी सॉरी टू इंटरप्ट मैम. So, मैं कहना चाहता हूँ कि मैम जो कि वैल्यू एडिशन और कुछ मोटिवेट और जॉय ऐसा ला सके, आपकी कोई मूवी है जो आपकी? मैंने तो अपनी 2-3-4 फिल्में बताई थी आपको. मेरी जो है फिल्म्स, I think मैं ज़िंदा हूँ is a very significant film because a girl gets married in a family, husband runs away
and she becomes the breadwinner of that his entire family. Till she meets somebody who she maybe could start her life again with, and then the crisis happens because husband comes back at the right time or the wrong time. You know, तो इस तरह का एक बहुत interesting subject है. Could change of the whole family. Yeah, whole family. But for the woman to become the breadwinner and keep the husband's family going, that was a very strange situation that she finds herself in. तो इस तरह के subjects कुछ हैं जो आपको देखने चाहिए, अनकही ज़रूर देख लीजिए. It's again about mental health. Mental health के ऊपर मैंने 2-3 फिल्मों में काम किया. मैं जिंदा हूँ में again society pushes her to a point where she becomes mentally disturbed and ends up in a mental asylum. So I've done a lot of work also in my writing. I would say I've done a lot of writing also which deals with mental health. मैं एक स्क्रिप्ट लिखने गई थी एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में, वुमेन्स वार्ड में मैं रही भी थोड़े हफ्ते, और मैंने काम भी किया, स्क्रिप्ट पे भी काम किया, पोइट्री भी काफ़ी लिखी. तो मैंने काफ़ी क्लोज क्वार्टर्स पे देखा है mental issues को, and I know that society can drive a perfectly fine, healthy human being to a point where they call her, then him or her, कि ये पागल है, इसका दिमाग खराब हो गया. And then the treatment begins and so many things happen, and there's a lot of work I've done. I will not go into that zone right now because we are basically here for Goldfish. तो कल please आइएगा, कल Goldfish फिल्म ज़रूर देखिए आप सब लोग, and then you can have another discussion right after the film. Tomorrow there is Goldfish film, and then after that there is discussion on the film as well as on the book. On the book. And now I request Mr. Rajesh Sharma and Mrs. Garg, Mrs. Jain, Chairman sir if he's here, Ronak sir, please come and join us. This is on the Film Festival as a token of love, and with that, I think pleasure